jungle. Parliament is the circus, elections are the ad campaigns, and people are the audiences. Today, we're all gathered here to know and understand the importance of our legislature through a mock parliament. What is legislature? Lawmaking is the primary and most important function of the legislature. It is through laws that policies of the government are laid down for implementation. In accordance with the provisions of the Constitution, the legislature makes new laws and may repeal outdated legal provisions. The legislature is the organ of the government that formulates laws. And the parliament is the place where these laws are argued, discussed, and debated for successful implementation and ethical, fair, and efficient ways of following these rules with members of the parliament who are representatives of various regions and sections of the society. The proceedings of the mock parliament today will include oath taking. The oath is an important ceremonial gesture signifying the official start to one's term in office. Importantly, it is a means for the official to make a public commitment to the duties, responsibilities, and obligations associated with holding public office. Obituary reference shall include peace and tributaries offered to the demise of members of the parliament, an accident or a calamity. Post the obituary reference, the Prime Minister shall introduce new ministers, and then the awaited question hour shall begin, where members of the Parliament can raise questions about any aspect of the administrative activity, and the concerned minister is obliged to answer. A breach of privilege, message from the upper chamber, welcome of the Russian parliamentary delegation, calling attention motion, legislative business bill will be introduced and a bill for consideration shall also take place. Now we shall begin with the proceedings of the parliamentary, starting with oath taking. Members to take the oath or affirmation. Secretary General, please. Shri Rhythm from the Ludhiana West constituency of Punjab will now take the oath or affirmation. Sir, would you like to take the oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In English, please. I, Rhythm, having been elected a member of the lower house of the Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty which I am about to enter. Srimati Manmeet from the Bareilly constituency of Uttar Pradesh will now take the oath or affirmation. Madam, do you want to take the oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Hindi, please. मैं मनमीत जो युवक संसद के निचले सदन की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की एकता एवं प्रभुसत्ता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी. Obituary reference. Honorable members, I have to inform the House of the sad demise of our former colleague, Shri Ram Prasad Sharma. Shri Sharma was a member of the Lok Sabha from 2001 to 2015, representing the Chandigarh parliamentary constituency. Shri Sharma was a committed social and political worker. Shri Sharma passed away on 13th March 2021 at the age of 70. Madam, I rise to pay my tribute to Sri Sharma, whose death has been deeply mourned by all of us. Though he crossed half century in his life, he seemed to be very young and active. He came from a family of freedom fighters, and his father made a name for himself, and this tradition was carried over by the family. He was an active social worker who used to perform his task with utmost devotion and sincerity. He was with us for the very last moment. He seemed to be very well and happy, therefore his sudden demise was all the greater. Now, I should like to extend my deep condolences to this family. श्रीमान, मैं आप
एवं सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में स्वयं को संयोजित करती हूँ। श्री राम प्रसाद शर्मा न सिर्फ पार्टी के एक निष्ठावान नेता थे, बल्कि एक जिम्मेदार सांसद, समाज सुधारक के अलावा एक महान शिक्षाविद भी थे। उनके द्वारा नशा उन्मूलन व ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए किया गया कार्य उल्लेखनीय है। श्री शर्मा एक बहुत अच्छे शायर भी थे। अपने मृदु स्वभाव के कारण वे सबके प्रिय थे। उनकी आकस्मिक मृत्यु से हम सब बहुत विचलित महसूस कर रहे हैं। मेरे लिए यह एक व्यक्तिगत क्षति है। उनके न रहने से हमने एक बहुत अच्छा सामाजिक, राजनीतिक व सार्वजनिक कार्यकर्ता खो दिया है। वे अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे बीच हमेशा रहेंगे। श्रद्धांजलि स्वरूप मैं उनके द्वारा लिखी चंद पंक्तियां कहना चाहती हूँ। कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शोक संतृप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रेषित करने में स्वयं को एवं अपने दल को संयोजित करती हूँ। We deeply mourn the loss of our friend, and I'm sure the House would join me in conveying our condolence to bereaved family. The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the departed. You all may now open your eyes. Introduction of new ministers. Prime Minister to introduce the new ministers. Madam Speaker, I have immense pleasure to introduce to you and through you to the House the new ministers, my colleague Rhythm, Minister of Education, Shri Dipin, Minister of Tourism. Now, the question hour starts. Question number 121, Srimati Rashmeet. Madam Speaker, will the Minister of Social Justice and Empowerment state that what are the actions the government is taking to eradicate the inhuman medieval practice of manual scavenging in India? What is the government's policy for the rehabilitation of these manual scavengers? Honorable Minister, Social Justice and Empowerment. Manual scavenging is shameful, dehumanizing, and barbaric. It must stop. No exception, no excuse. Manual scavenging is a disgrace on humanity. We feel that the present law is not enough. Considering the urgency, government is taking up the matter as top priority, and the draft for the prohibition of employment as manual scavengers and the rehabilitation bill 2021 is under circulation to the concerned ministers and departments. The bill, with the stricter provisions on eradicating the dehumanizing practice and rehabilitating the people involved, is to be introduced in the summer session of the Parliament. Government is already running a self-employment scheme for rehabilitation of manual scavengers, and we hope to achieve it in a time-bound manner by March 2022. Scavengers and their dependents, irrespective of their income, will be eligible for assistance. The biggest violator of the law in India is Indian Railways, which has toilets dropping all the excreta on the ground or stations, and they employ scavengers to clean it manually. What does the Honorable Minister say about this? For the information of Honourable Member, the proposed bill has a provision that Indian Railways will ensure that within 2 years, the toilets in the trains are converted into a form that does away with the manual handling of excreta. Next question, question number 122, Srimati Harshita. Madam Speaker,
क्या मानव संसाधन विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंत्रालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित शिक्षकों के समक्ष में कोई सर्वेक्षण करवाया है? अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार की क्या योजना है? मानव संसाधन विकास मंत्री। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2020 के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 5.08 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया गया था। तथापि आरटी अधिनियम के लागू होने के बाद राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 6.31 लाख शिक्षकों के पद स्वीकृत किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लागू होने के बाद इस कार्यक्रम के अंतर्गत 19.14 लाख शिक्षकों के पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों द्वारा 31 दिसंबर 2020 तक 12.6 लाख शिक्षकों को भर्ती कर ली गई है। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2020 से 21 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर सरकारी स्कूलों में 8,11,774 शिक्षक अप्रशिक्षित हैं, जिनके प्रशिक्षण के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कराया जा रहा है। श्रीमती हर्षिता। सभापति जी, एक तरफ तो माननीय मंत्री जी देश में शिक्षकों की कमी का हवाला दे रहे हैं और दूसरी तरफ शिक्षक बनने के लिए सीटेट अनिवार्य कर दिया है, जिसे सिर्फ 10% लोग ही उत्तीर्ण कर पा रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधान के अनुरूप 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु किसी पात्र के लिए न्यूनतम अर्हता सीटेट उत्तीर्ण होना निश्चित की है। सभापति जी, मैं माननीय सदस्य से बिल्कुल सहमत हूँ कि सीटेट का परिणाम निराशाजनक है, लेकिन ये भी सही है कि इस परीक्षा के माध्यम से हमें योग्य और बाल मनोविज्ञान में दक्ष शिक्षक प्राप्त हो रहे हैं। हमारा लक्ष्य केवल बीएड या पीटीसी डिग्री धारक शिक्षक नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे शिक्षक चाहिए जिन्हें बाल मनोविज्ञान की समझ हो और बदलते परिवेश के अनुरूप कंप्यूटर का भी ज्ञान हो। इस संदर्भ में हमने एनसीटीई को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि कंप्यूटर को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। श्रीमती जगजीत कौर बग्गा। सभापति जी, सीटेट का परिणाम यह साबित करता है कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस को मान्यता देने में भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। क्या मानव संसाधन विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश में शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? मैं सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहती हूँ कि एक उच्च सदस्य समिति बनाकर सभी कॉलेजेस की जांच होगी और मानकों में कमी पाए जाने पर मान्यता रद्द होगी। सरकार ने सभी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की गुणवत्ता हेतु कंप्यूटर विषय को अनिवार्य करने पर बल दिया है। साथ ही साथ एनसीटीई ने बीएड के पाठ्यक्रम को 2 वर्षीय करने की योजना को मंजूर कर दिया है, जिसमें कम से कम 6 माह का अनिवार्य शिक्षण प्रशिक्षण शामिल है। सरकार अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए बजट में शिक्षण प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रावधान करेगी, क्योंकि हमारा मानना है कि शिक्षक देश का भविष्य संवारते हैं और हम चाहते हैं कि देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, श्री दीपेन। माननीय सभापति महोदय, क्या माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री तानी कृपा करेंगे? क्या सूखे की वजह से पनपे वर्तमान खाद्य संकट से निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है? यदि तो खाद्य संकट से निपटने की सरकार की क्या योजना है? Honorable Minister of Food and Civil Supplies. स्पीकर मैडम, वर्तमान में हमारे देश में खाद्य पदार्थों का भरपूर भंडार मौजूद है। जून 2021 को हमारे पास 5.452 करोड़ टन भंडार मौजूद था, जो कि हमारे देश की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त है। लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार गेहूं व चावल का आयात भी कर सकती है। मैडम, खाद्य संकट सिर्फ सूखे से ही संबंधित नहीं है, बल्कि इसके और से बहुत कारण भी हैं। उन कारणों से निपटने के लिए सरकार कई क्षेत्रों में काम भी कर रही है। क्योंकि हम सिर्फ मानसून पर निर्भर नहीं रह सकते, इसीलिए सरकार ने दीर्घकालिक योजना बनाई है, जिसके तहत
कृषि उन्नत तरीकों का प्रयोग करना, किसानों को सस्ते दामों पर बीज, खाद व बिजली उपलब्ध करवाना, खाद्य संकट से निपटने के लिए उनके उपाय निकालना आदि शामिल हैं। या यूं कहें तो हमें एक और हरित क्रांति की आवश्यकता है। Shri Dipen. Speaker Madam, I thank you for giving me another opportunity. Will the Minister of Food and Supplies be pleased to state what the government is doing to solve the problem of storage so that the wastage of food grains be stopped? Madam, my government is really concerned about the inadequate storage facility of food grains and edible oils. As the largest procurer of food grains, the center required a storage capacity of 80 million tons, while only capacity of 64 million tons was available now. Because of lack of storage facility, a large quantity of food grain has been spoiled. The center had proposed state to build a storage capacity to hold at least 3 months of PDA stock. But government alone cannot resolve this. So I urge private sector to work along with the government to resolve this problem. Next question. Question number 124. Srimati Manmeet Kaur. Will the Minister of Affairs be pleased to say that what steps government has taken to tackle terrorism in India? Why doesn't the government establish fast-track courts to hear the case of terrorists? Honorable Minister of Home Affairs. Speaker, Madam, government is really concerned about the tackle the problems of terrorism. We have taken various steps to counter this problem. We have deployed energy units in all metropolitan countries. We are also working on giving special commando trainings to all the state police so that they can respond effectively during crisis. We have established a special cell to share the intelligence information regarding state intelligence agencies. After 2611, government established fast-track courts to hear the cases related to terrorism. Because of this only, the terrorists like Kasab couldn't escape the law. Srimati Manmeet Kaur. Speaker, Madam, thank you for giving me another opportunity. I would like to ask the Honorable Minister what steps government has taken for the rehabilitation of victims of these terrorist attacks. Honorable Members of Home Affairs. Speaker, Madam, for the moment, government policy is to give a compensation of 5 lakh rupees to dead, 2 lakhs rupees to severely injured, and 50,000 rupees to normally injured. But through you, I would like to assure the House that we are working on the bill for rehabilitation of the terrorist attack victims, in which the government will bear the full cost of education and the dependence of victims and providing security to the witness of cases related to terrorism. Will the Honorable Minister be pleased to state that what the government is doing to stop the infiltration across the Bangladesh border? Speaker, Madam, for the information of the honorable members and the House, our borders are sealed and intact. There has been a considerable decline in infiltration across the borders since last 3 years. Our sources are well alert to handle the situation. Now, the question hour is over. Excuse me, madam, please. No more supplementary, please. Breach of privilege. Madam, a serious breach of privilege has been committed by Honorable Minister of Human Resource and Development, who talked about the policy statements regarding Kendriya Vidyalayas outside the Parliament when the House is in session. Srimati Harshpreet, have you given notice of it earlier? You may give due notice and I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. I have already given notice of it at 10 a.m. today. It will be examined when it comes to me, and I shall consider it and let you know my decision. Now papers to be laid on the table. Message from the upper chamber. Secretary to report the message from the upper chamber of the Youth Parliament. Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary General of the Rajya Sabha. In accordance with the provisions of Rule 114 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the right of children to free and compulsory education
Amendment Bill 2021 as passed by the Rajya Sabha at its sitting held on 24th April 2021. Secretary to lay on the Secretary to lay on the table a copy of bill as passed by the upper chamber. Madam Speaker, I lay on the table the right of children to free and compulsory education, Amendment Bill 2021, as passed by the Rajya Sabha on 24th April 2021. Welcome of the Russian parliamentary delegation. Honorable members, I have to make an announcement. On my own behalf of the Honorable Member of the House, I have a great pleasure in extending our warm welcome to Her Excellency, Madam Elizabeth, Speaker of the Russian Parliament, and the Honorable members of the Russian Parliamentary Delegation, who are on a visit to India as our honored guest. The other honorable members of the delegation are Madam Jayanti, the Deputy Speaker, Mr. Pranas Abrawal, also Deputy Speaker. It is a very high-powered delegation. The delegation arrived on Sunday, 21st August 2021, and they are seated in the special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. Calling attention motion. Now let us take up the calling attention motion. Srimati Navya Vashisht, please call the attention of the ministers. स्पीकर मैडम, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए की लगातार गिरती कीमत की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। पिछले एक वर्ष में लगातार रुपए की कीमत में गिरावट आ रही है, पर सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है। Yes, Minister of Finance, please. Madam, no doubt the falling of rupee is a real concern for our economy, and the government is conscious of the situation and is taking necessary action. The measures announced by the Reserve Bank of India in consultation with the government are: the RBI has reduced interest rates citing inflationary pressures. Companies in the manufacturing and infrastructure sectors with foreign exchange earnings can now borrow in dollars to cover rupee loans. The government has relaxed the portfolio investment norms to attract foreign investment in India. The leader of the opposition is an economist herself, and she must be aware that the current situation is due to a global recession. Srimati Navya Vashisht. स्पीकर मैडम, देश की आर्थिक नीति समग्र पहलुओं को देखते हुए बनती है। ऐसा नहीं कि उसमें महंगाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की दुहाई दे रही है। मुद्दा ये है कि इतनी भला क्यों हो रही है। पैसे देश से बाहर जा रहे हैं, लोग डॉलर खरीद रहे हैं और डॉलर की उपलब्धता में कमी आने के कारण रुपए की कीमत गिर रही है, यानी $1 के पीछे ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। हमें सरकार महंगाई को राष्ट्रीय समस्या नहीं मान रही है। आरबीआई ने पिछले 1.5 साल में महंगाई घटाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई हैं, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ है। अब कमजोर रुपए से आरबीआई द्वारा उठाए गए कदम बेमानी हो जाते हैं। पिछले हफ्तों और महीनों में रुपए को गिरने से बचाने के लिए खुले बाजार में डॉलर बेचने की भारतीय रिजर्व बैंक की कोशिश नाकाम रही है। इससे मुश्किलें और बढ़ी हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बातें बनाने की बजाय कुछ ठोस कदम उठाएं, जिससे जनता को कुछ राहत मिले। अंत में मैं चेतावनी स्वरूप सरकार से इतना ही कहूंगी, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। Legislative Business Bill introduced. Honorable Minister of Law and Justice to introduce the bill. Ma'am, I beg to move for leave to introduce a bill, the Judicial Standards and Accountability Bill 2021. The question is that leave be granted to introduce a bill, the
Judicial Standards and Accountability Bill 2021. Those who are in favor will please say A. Those who are against it, please say no. I think the A's have it, the A's have it, the A's have it. The leave is granted. Ma'am, I introduce the bill. The bill will be considered in the next session of the Parliament. Bill for consideration. Now, the House will take up consideration of the Women, Girl, Child Prevention of Atrocities Bill 2021. Women and Child Development Minister, please. I beg to move that the bill to provide for stringent punishment to curb atrocities against the girl, child, and woman and for matters connected to be taken into consideration. Madam Speaker, I am confident that all the honorable members of this House, irrespective of the party affiliation, will welcome the bill wholeheartedly. I now move that the Women and Girl Child Prevention of Atrocities Bill 2021 be taken into consideration. Motion moved. Speaker Madam, women have always been a victim of molestation and sex abuse, but the incident of Bharati, which attracted media's attention, was a shocker. It was really a brutal act. India is not the best place for women to work and move freely on streets. Speaker Madam, it would have been better if government would have taken some steps against Khap Panchayats also. In my view, this bill should have strict punishment for self-proclaimed moral agents. I hereby support this bill and request government to have female judges to hear the cases against the women. Miss Riddhi Kaur. शादी के दिन बारात लेकर नहीं आया दहेज लोभी दुल्हा, पति बना हैवान, पत्नी को अथमरा कर सड़क पर फेंका और मानवता हुई शर्मसार। पुरुषों ने महिलाओं को बंधक बनाकर पीटा। यह 3 खबरें पिछले दिनों के अखबारों की सुर्खियां रही। सभापति जी, यह खबरें स्पष्ट करती है कि भारत की देवभूमि अब देवियों के लिए सुरक्षित नहीं रह गई है। खास तौर पर दिल्ली, मुंबई व कलकत्ता जैसे महानगर तो महिलाओं के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है। यह खबरें स्पष्ट करती है, यह खबरें और महिलाओं पर घट रही आपराधिक वारदातें स्पष्ट करती है कि आज भी पुरुष समाज महिलाओं को सम्मान और समान अधिकार देने को सहज नहीं है। बिल में सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। मैं अपने शब्दों को एक पंक्ति के द्वारा रखना चाहूंगी कि नहीं थमती दास्ता जिस्म और रूह जार करने की, और बाकी है क्या दरिंदगी की हद पार करने की। वो बेटी किसकी थी मत पूछो मुझसे रह गुजर, वो बेटी किसकी थी मत पूछो मुझसे रह गुजर, तैयार रहे उन नामुरादों के टुकड़े हजार करने को, उन नामुरादों के टुकड़े हजार करने को। आबरू जाने कितनी हर रोज कुचली जाती है, आबरू जाने कितनी हर रोज कुचली जाती है। नोच लो वो गंदी नजरें, उठे जो गंदे वार करने को, उठे जो गंदे वार करने को। Speaker Madam, the number of cases of rape of girl, child and women are increasing rapidly. Some of these girls and women are brutally killed after rape. There is no fear of law amongst the rapists. Hence, it has become necessary to provide deterrent punishment for the perpetrators of the atrocities against the girl, child and the woman in order to restore a respectable position to the woman and girl child in the society. Therefore, I support the bill. Srimati Sia Mehra. Srimati Siha Mehra. Speaker Madam.
Speaker Madam, I thank you for giving me an opportunity to speak on this bill. The most obvious reason for this practice to continue in India is because of the fact that the caste system continues to remain at its rigid best. I request the ministers to consider my request. I support the bill. Madam, I'm grateful to all the ones who have supported the bill, and I'm also grateful to the ones who have put the constructive criticism on it. Last but not the least, I'm also grateful to the ones who have given us advice. As regard to the point raised by the honourable member that the crime is bailable, there seems to have been some misunderstanding that because for any crime that has a punishment for 7 years, life imprisonment, or death penalty, it is automatically considered as a non-bailable crime as per the IPC provisions. I hope I have answered most of the questions in course of my speech raised by the honourable members. I once again thank you for your support and seek your cooperation in implementing the measure and request the House to pass the bill. Now, the question is that the Women and Girl Child Prevention of Atrocities Bill 2021 matters connected therewith be taken into consideration. Those who are in favor will please say A. Those who are against it, please say no. I think the A's have it, the A's have it, the A's have it. The motion is adopted. Now, the House is adjourned and will meet tomorrow at 11 a.m. What an amazing performance by the students of class 11 and 12 with an apt mock of the parliamentary proceedings, giving an opportunity to all members, the female representation, the role of ruling government and the opposition, and no linguistic barriers.